नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग अकबर साहब। नहीं 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 नहीं, आप नहीं, हम सरकार चला रहे, हमें पता है। वी हैव नो, यू गो थ्रू दिस पेज, यू गो थ्रू 600 आई विल गिव यू। नहीं अरे साहब, ये बुक ले लो, सेकंड बुक ले लो सर। आप पूरा देखो, एनडीएसए रिपोर्ट अकबर साहब पूरा पढ़ो, बिना पढ़े आप मत बोलो। नो 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 अकबर साहब, कभी कभी हम इंसान हैं, कोई भी गलतफहमी हो सकता है। आप मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा अच्छा दोस्त, ये इसका मतलब ये नहीं है आप विदाउट वेरीफाइंग दिस रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट you cannot make such type of statements. Right. I'll now give me the mic. I'll say. So let me complete. I'm not yielding, Akbar Sahab. I'm not yielding. No, you are scolding like anything. I'm sorry. Absolutely, I'm sorry. I'm not going to yield. You have taken much more than 1 hour. No. आप बुक किताब कुछ भी पढ़ो, मगर गलत नहीं बोल सकते आप। नहीं, आप गलत नहीं बोल सकते। आप अगर वो सचमुच रहा तो सर, I have to answer. I'm the floor, I'm the leader of the house. I have to answer every question. I have to address every member. I have to reply. No, you cannot. The government is at liberty to take steps pursuant to the final report of National Dam Security Authority in accordance with the law. This is what it is saying. Page number 664. आप माइक में दे रहे, फिर भी बोल रहा हूं। Akbar Sahab, 656 page number, you go through that page. The Director General, Vigilance and Enforcement submitted interim report on 2/8/2024 and further informed the government through letter dated 38/2/2024 that as directed by the government, it is restricting its inquiry to Medigada barrage only through letter so and so date has placed before. साहब, अकबर साहब, अब हम इंसान है, गलत हो सकता है। आप अरे मैं आपको विथ रेफरेंस पेज नंबर, आई एम कोटिंग पेज नंबर। द कमीशन, द फाइनल रिपोर्ट, डायरेक्टर जनरल विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट, Medigada barrage. The government has produced a document mentioned in the list annexed to this said letter. However, it is reported through the said letter that the placement registers of work pertaining to all components. Dam safety report also is there. MIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कुछ चीजें ये इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में जो लिखा है, सरकार ये रिपोर्ट जो टेबल किए, जो चर्चा के लिए हम मौका दिए, उन्हें समझने में कुछ गलतफहमी हो गए। क्योंकि मैं सुन रहा था अकबर साहब कुछ सुझाव देंगे, हम लोग सुनकर सबका सोच क्या है, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा ये तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना राज्य ने हासिल किया पानी के वजह से। ये पानी सोने से भी बहुत कीमती है तेलंगाना में। वो पानी के नाम पे जिसने लूटा है इस राज्य को, 1 लाख करोड़ रुपए जिसने लूटा है, उसके बारे में चर्चा होने के बाद हुकूमत कैसे चलाना, हुकूमत ला लिए हमको और कांग्रेस पार्टी को कहीं से सीखने का कोई जरूरत नहीं है। हम इतना प्लेटफॉर्म इसीलिए दिए सबसे चर्चा करें, सबके सुझाव लेके सरकार एक निर्णय लेने के लिए हम चर्चा पे रखे। निर्णय आप लेने के लिए टेबल नहीं किए ये पूरा कमीशन रिपोर्ट। वी हैव टोल्ड, we have given assurance to 4 crore Telangana people, saying that we have told at the time of election, we wanted to appoint a sitting judge inquiry on this Medigada, Annaram, Sundilla barrages. We have requested to Telangana High Court to spare one sitting High Court judge.
they have refused to appoint a High Court judge. They don't want to spare any High Court judge. Then they have given a suggestion. Why don't you take a retired justice? Then Congress Party, government of Telangana has appointed a senior most Supreme Court judge, Pinaki Chandra Ghosh. He has worked combined Andhra Pradesh Chief Justice. He has worked Supreme Court judge. He has worked in Calcutta High Court. Same time, he has worked first Lokpal Commission chairman. So his integrity, he has addressed Shashikala case, Jayalalitha case. He has given many judgments. Then we have appointed one-man commission, PC Ghosh Commission. He has taken almost 1.5 years time. He has examined everything. Akbar साहब ने ये कह रहा है कि NDSA रिपोर्ट आप नहीं दिए, विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट रिपोर्ट आप नहीं दिए, कार्ड रिपोर्ट आप नहीं दिए, फिर पीसी घोष ने कहां से ये पूरा लेकर कहां से वो रिपोर्ट लिखेगा? सर, sir, we have given everything. So that is what I wanted to correct you records. Sir, he has referred everything. NDSA report, he has referred vigilance and enforcement report. You go through this. Responsible? Are those contractors not involved in corrupt practices? Are those contractors not responsible for what is happening at Madigada? The pillar and that, why is their name omitted from there, sir? I do not want to use the name, sir. I do not want to use the name because people watch me speaking. So I don't want to name them and give them some publicity. But these people should be checked, sir. Why are we depending on the contractors? We need not depend on these contractors, sir.